Hello everyone, I hope you are doing well and you're preparing well for your respective examinations. We, Ignited Heads, have started this new initiative of News at 10 for all the defense aspirants. So from today onwards, we'll be coming up with a new video every day at 10 p.m. Monday to Friday, covering all the important news of that day. So let's get started with today's news, that is 19th April 2023. So those of you who are not aware about me, you can go through my introduction, basic introduction. You can follow us and join us on our Telegram family, on our YouTube family. You can write email on our email ID, and you can follow us on our Instagram. So let's get started with today's news. The first news article is from Times of India, and this is on sharing of Aadhaar data. तो news क्या है? News है that UIDAI must share data for heinous crime probe. ऐसा High Court ने कहा है. Now let's get into the context. Context क्या है? This is by the Punjab and Haryana High Court has made it clear that the UIDAI or the Unique Identification Authority of India, ये कौन सी ये अथॉरिटी क्या करती है? This is the authority which is the governing authority for your Aadhaar cards, right? So, which works under the Ministry of Electronics and Information Technology or METI. Now, Punjab and Haryana High Court ने METI और UIDAI को ऑर्डर दिया है to share information pertaining to offences involving heinous penal provisions to the police authorities. Right? Now, as there were no specific provisions of providing such details to the police, ये order क्यों दिया है? Because पहले जो rules या regulations हैं, उसमें there is no such provision जिससे police could get this specific information about the perpetrators of heinous crime. Right? So, HC High Court passed these orders while exercising the court's power, allowing a petition filed by police seeking directions to UIDAI to provide information relating to Aadhaar cards for providing a criminal case involving fake ones. Right? Now, what is the background? Background क्या है? News क्यों आया? Or why did the High Court give this order? Just the background is that the UIDAI said in its affidavit that sharing or using of biometric information for any use other than the generation of Aadhaar number and authentication is impermissible. तो ये ऑर्डर इसलिए पास हुआ बिकॉज UIDAI ने एक एफिडेविट सबमिट किया जिसमें UIDAI ने कहा था दैट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को हम नहीं शेयर कर सकते हैं सिवाय if the use is for Aadhaar number and authentication. उसके अलावा it is not permitted to use the biometric information. ये कहाँ है? Where is this given? This is in the section 29 of the Aadhaar Act. Aadhaar Act के section 29 में ये restrictions लगाई गई हैं that sharing of information collected or created under this act. ठीक है? And UIDAI also referred to Regulation 3 of the Aadhaar Act, which says, core biometric information collected by the authority under the Act shall not be shared with anyone for any reason whatsoever. Okay? Now we'll remember Section 29, Regulation 3, Aadhaar Act, which is restricting sharing of biometric data, right? Now, the UIDAI also added that it does not have the technology to match fingerprints, etc., found at the scene of crime with those available on the database. The UIDAI added that the biometric information is only used for deduplication of residence and to ensure uniqueness of Aadhaar number. मतलब UIDAI ने कहा कि वो जो आपकी बायोमेट्रिक डेटा है उसको बस आधार कार्ड के डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए यूज करता है. There is no other use of the biometric data. So the UIDAI submitted that as per the mandate of the Aadhaar Act and the direction of the Supreme Court, such information cannot be provided without giving an opportunity of hearing to the Aadhaar card holder in question. ठीक है? तो UIDAI ने फाइनली कहा कि आधार एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे we cannot provide such information, such data without giving the opportunity of hearing to the Aadhaar card holder in question. ठीक है?
नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस व्हेन इंफॉर्मेशन कैन बी रिवील्ड? अभी हमने देखा कि सेक्शन 39 और रेगुलेशन 3 के तहत the UIDAI cannot share your biometric information with anyone, right? So what are the exceptions? Exceptions हैं इसमें. The exceptions are certain provisions of the Aadhaar Act 2016 allows for sharing the information in following two scenarios. First, the interest of national security. A joint secretary in the central government may issue a direction for revealing Aadhaar number, biometric number, and your demographic information, right? तो अगर आपके नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में योर आधार डेटा कैन बी रिवील्ड बाय अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज योर फोटोग्राफ, राइट? ये चार चीजें कैन बी रिवील्ड. नेक्स्ट इज सच अ डिसीजन विल बी रिव्यूड बाय एन ओवरसाइट कमिटी एंड विल बी वैलिड फॉर 6 months. मतलब इवन इफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए द डेटा इज रिवील्ड, वो सिर्फ 6 months वैलिड रहेगा, राइट? नाउ द सेकंड कंडीशन जहां पे आपकी डेटा कैन बी रिवील्ड इज ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ओनली एन इंडिविजुअल्स आधार नंबर, फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में बी रिवील्ड. मतलब यहाँ पे जो चार चीजें थी उसमें से योर बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पे नहीं आ सकता है, राइट? कोर्ट के बोलने पे भी योर बायोमेट्रिक डेटा कैन नॉट बी revealed, right? Now we go to the next news. ये है आपके इकोनॉमिक टाइम्स से, and this is about the pre-pax resolution. What is pre-pax resolution and what is the context of this news? Let's get into it. तो pre-pax resolution was for the resolution of the MSME enterprises. मतलब उनके इंसॉल्वेंसी के लिए there was a policy जिससे एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस था फॉर MSME और दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. नाउ व्हाट इज द इशू कि लास्ट 2 years में इवन आफ्टर द लॉन्च द लेंडर्स प्रेफर द ओल्ड स्कीम गिवन स्मॉल आउटस्टैंडिंग एंड पॉसिबल डिलेज इन कोर्ट. मतलब जो न्यू स्कीम था हमारा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, इट हैज नॉट टेकन अप. लोग नहीं जा रहे हैं इसमें. दे स्टिल प्रेफर द अदर or the older version of the process. Context क्या है? The pre-packaged insolvency resolution process, PPIRP, for micro, small and medium enterprise has had a circumspect start to its innings with only 4 cases admitted in 2 years since the government tailored the program to help extricate loans stuck in small businesses. Right? Now we'll see कि था क्या ये pre-packaged insolvency resolution process में था क्या. Now, it is a pre-pack envisages the resolution of the debt of a distressed company through a direct agreement between the secured creditors and the existing owners or outside investors instead of public bidding process. Right? आपको पता होगा कि जो ओल्ड स्कीम है उसमें जो आपका इंसॉल्वेंसी का केस है दैट इज सॉल्व थ्रू पब्लिक बिडिंग. बट इसमें जो आपका पैकेज वाला था दिस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इसमें एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड एग्जिस्टिंग ओनर्स और आउटसाइड इन्वेस्टर्स के बीच में ही होता द होल प्रोसेस. नाउ अंडर द प्री पैक सिस्टम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल एग्री to terms with the promoters or a potential investor and seek approval of the resolution plan from the NCLT or the National Company Law Tribunal. The approval of at least 66% of financial creditors that are unrelated to the corporate debtors would be required before a resolution plan is submitted to the NCLT. मतलब जो आपके कंपनी क्रेडिटर्स हैं उसके उनके 66% creditors का approval was required before the resolution plan is submitted to your National Company Law Tribunal. The next point is the NCLT will be required to either accept or reject an application for a pre-pack insolvency proceeding before considering a petition for a corporate insolvency resolution process. ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये है किससे रिलेटेड. योर PPIRP, दिस इज फॉर MSME का insolvency resolution. Okay, for your exam purposes, that is enough. If you're someone who's interested in economics, you can go through this. You should be aware NCLT क्या है, right? चलो, let's go to the next news. The next news is from your PIB, Press Information Bureau, और news है National Panchayat Awards. क्यों important है या why it came to news? Because
PM congratulated the awardees of your National Panchayat Awards. कंटेक्स्ट क्या है कि PM ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है योर अवॉर्डीज को. की पॉइंट्स क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज सेलिब्रेटिंग नेशनल पंचायत अवार्ड वीक फ्रॉम 17th to 21st April. नेशनल पंचायत वीक कौन सा होता है? 17 to 21st April. यहाँ से आपका MCQ आ सकता है. एज अ पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 लीडिंग टू द नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24th April. नेशनल पंचायती राज डे कब होता है? 24th April. Another MCQ. President of India inaugurated the National Conference on Incentivization of Panchayats and presented the National Panchayat Award in New Delhi. किसने दिया अवार्ड? प्रेसिडेंट ने. प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया ये अवार्ड्स. नेक्स्ट, इट ऑनर्स द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत्स by assessing their performance in the attainment of SDGs. अवार्ड क्यों मिल रहा है किसी पंचायत को? It is honoring the best performing panchayat by assessing their performance in the attainment of SDG or the Sustainable Development Goals. ये कब स्टार्ट हुआ? 2011 में. एक बुकलेट भी रिलीज हुआ है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क ऑफ अवॉर्डी पंचायत्स का पूरा डेटा है. And what were the categories of your this awardee panchayats? First is a Deen Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Puraskar for the performance under individual LSDG. Then is your Nanaji Deshmukh Sarvottam Panchayat Satat Vikas Puraskar for the aggregate performance under all 9 LSDG themes and Green Initiative. Next is your Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar. देन कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार. ओके, तो हमने देख लिया कि हमारा वीक कौन सा है, नेशनल पंचायत अवार्ड वीक. देन वी हैव द नेशनल पंचायती राज डे कौन सा है, किसने अवार्ड दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. क्यों ये अवार्ड मिलता है? देन वी सॉ द बुकलेट, क्यों अवार्ड मिलता है फॉर SDG, कब स्टार्ट हुआ? 2011. एंड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स, राइट. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम योर लाइव मिंट. ठीक है, दिस इज ऑन योर ART रेगुलेशन और द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस. गवर्नमेंट इज टाइटनिंग द नॉर्म्स फॉर योर IVF प्रोसेस. IVF का फुल फॉर्म बताओ मुझे इन कमेंट सेक्शन. IVF का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स सी द कंटेक्स्ट. द हेल्थ मिनिस्ट्री has tightened regulation for your assisted reproductive technology, ART. What are the various types of ART? Types of ART. Write down in comment section. Commonly used to treat infertility through vitro fertilization. Aiming to rein in a mushrooming money making industry. क्यों इस पर हम टाइट कर रहे हैं रेगुलेशन? बिकॉज काफी ज्यादा लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, इससे दे आर यूजिंग इट टू मेक मनी, राइट. The government has told IVF clinics to follow compliance procedures with respect to the retrieval of oocyte. What is an oocyte? ये आपके बायो में आ सकता है क्वेश्चन. है डेवलपिंग एग इन अ फीमेल. नाउ लिमिटिंग द नंबर ऑफ oocyte in one cycle and putting a cap on the number of embryos. Embryos क्या है? That can be transferred to the female during the treatment cycle. Now ART के बारे में we'll see some points. First, it is used to treat infertility. It includes fertility treatments that handle both women's egg and a man's sperm. मतलब the ART is not limited to a female, it is also related to a man. Next, we see it works by removing eggs from a woman's body. The eggs are then mixed with sperms to make embryo. The embryos are then put back in the woman's body. In vitro fertilization is the most common and effective type of ART. ठीक है. ART procedures sometimes use donor eggs, donor sperm, or previously frozen embryos, right? It may involve a surrogate or gestational carrier. A surrogate is a woman who becomes pregnant with sperm from the male partner of the couple, right? Surrogate का definition आपको पता चल गया. A gestational carrier becomes pregnant with an egg from the female partner and the sperm from the male partner. ये भी आपको पता चल गया. Now, the most common complication of ART is a multiple pregnancy. ठीक है, क्योंकि हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज अ चांस दैट मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो जाए, मल्टीपल प्रेगनेंसी आ जाए. इट कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज दैट आर पुट इनटू अ वुमेन्स बॉडी. ओके,
तो आप ये 2 क्वेश्चंस मुझको आंसर करेंगे इन कमेंट सेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ART एंड द फुल फॉर्म ऑफ योर IVF. The next news is from Indian Express. This is on Syria and Tunisia. What is the context? Context है कि Tunisia has become the latest Arab state to establish diplomatic ties with Syria after cutting off relations a decade ago. Now tell me, Tunisia कौन से कॉन्टिनेंट पे है? ठीक है, एंड नेबर्स ऑफ टूनिशिया. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए टूनिशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है और नेबर्स कौन कौन से टूनिशिया के. नाउ Syria will reopen its embassy in Tunisia after the country announced the appointment of new ambassador to Syria. Now we'll see Arab Spring क्या है. Arab Spring was a series of pro-democracy uprisings that enveloped several largely Muslim countries, including Tunisia, Morocco, Syria, Libya, Egypt, and Bahrain. ठीक है. Now we see, next point is the events in these nations generally began in the spring of 2011. कब हुआ था Arab Spring? It took place in the year 2011. Springs में. Springs कब होता है? February, March, April is the spring season. Next we see कि हुआ क्या? What was the outcome? The outcome was that this political and social impact was very grave. इसका popular uprising remains significant even today. जो आपके सीरिया में issues दिख रहे हैं, that is the impact is of the Arab Springs, right? Then when protests broke out in Syria, in Tunisia in 2010 and spread to other countries, there were hopes that the Arab world was in for massive changes. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए which were the countries involved in your Arab Spring. These were Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, Bahrain and Syria. What were the expectation या क्यों हुआ था Arab Spring? To get in democracy. इन सारे countries में क्या था? There was old autocracy, right? But ऐसा हुआ नहीं. But Tunisia is the only country where the revolutionaries outwitted the counter-revolutionaries, right? They overthrew Zine El Abidine Ben Ali dictatorship and the country transitioned to a multi-party democracy. Now, we saw Tunisia, Egypt and Yemen, Libya, Bahrain और Syria, इन सारे countries में Arab Spring हुआ था to throw the old autocracy and bring in new democracy. But सिर्फ Tunisia was the country where democracy असली में आ पाया. Rest all the countries वहां पे जो आपका revolt था, it didn't work. So there was no outcome. There was no democracy. Again, जो आपका old system था, everything shifted back to it. ठीक है. Next we see the news is on your G7. G7 renewables target. ठीक है. What is the context? The group of 7 or G7 ministers meeting on climate, energy and environment was held in Sapporo. Sapporo कहाँ है? जापान में. लोकेशन वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको 2-3 आइलैंड्स का नाम देके, होकाइडो, सपोरो और 2-3 और आइलैंड्स का नाम देके पूछ सकते हैं कौन से कंट्री में. जैसे इस बार न्यूजीलैंड पे क्वेश्चन आया था, राइट? What are the key points? In Sapporo, G7 committed to collectively increasing offshore wind capacity by 150 gigawatt and adding solar capacity of over 1 terawatt. G7 कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो कलेक्टिवली अपना ऑफशोर विंड कैपेसिटी को 150 गीगावाट से बढ़ाएंगे और 1 टेरावाट का सोलर कैपेसिटी ऐड करेंगे. द ग्रुप कमिटेड टू एक्सेलरेट द फेज आउट ऑफ अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स बट फेल्ड टू शेयर अ टाइमलाइन फॉर द फेज आउट. दे हैव डिसाइडेड दैट दे फेज आउट योर अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स, राइट? बट टाइम कुछ नहीं है, टाइमलाइन नहीं है इसका. Countries reaffirmed their commitment to fully or predominantly decarbonized power sector by 2035. G7 has reiterated the commitment to eliminate efficient fossil fuel subsidies by 2025 or sooner. Now the energy transition ambition is not equally shared among the members. मतलब not everyone is agreeing कि इसी speed पे इसी time पे we'll transition. On loss and damage, the G7 committed to working on the decisions agreed upon at COP27. G7 countries committed themselves to the Forum of Climate Club
नाउ क्लाइमेट क्लब किससे रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू योर G7, याद रखेंगे। ठीक है, हाउएवर द प्रेजेंट मीटिंग डिड नॉट डिस्कस द एक्शन एजेंडा फॉर द क्लब। क्लाइमेट का क्लब याद रखेंगे, G7, G8, G20 कंट्रीज याद रखेंगे, सपोरो कहाँ है ये याद रखेंगे, और आप ऊपर ऊपर से याद रखेंगे कि एक क्लाइमेट क्लब बन रहा है, दैट दे हैव इंक्रीज देयर सोलर एनर्जी का कैपेसिटी बाय 150 गीगावाट्स एंड सोलर कैपेसिटी ऑफ ओवर 1 टेरावाट, राइट। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। दिस इज मैग्नापोर्थ ओराइजे फंगस। क्या हुआ है? व्हीट ब्लास्ट, अ फंगस दैट स्प्रेड टू 3 कॉन्टिनेंट्स कैन थ्रेटन फूड सिक्योरिटी globally. Now context क्या है? Scientists have warned that the fungus Magnaporth oryzae, which is destroying South American wheat crops, could spread worldwide. और जो डिजीज होगा दैट इज नोन एज व्हीट ब्लास्ट। नाउ व्हीट ब्लास्ट डिजीज किससे होता है? मैग्नापोर्थ ओराइजे फंगस से। व्हीट में लगता है, व्हीट ब्लास्ट डिजीज का नाम है, और जो फंगस कॉज करता है दैट इज मैग्नापोर्थ ओराइजे फंगस। की पॉइंट्स क्या है? दैट मैग्नापोर्थ ओराइजे ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। कहाँ का फंगस है? साउथ अमेरिका का है, बट इसका इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन एशिया एंड अफ्रीका, राइट। The fungus has the potential to affect not only wheat but also other major food crops. Magnaport oryzae infects wild and cultivated grasses. ठीक है, most notably rice and wheat. Now, in the comment section, tell me what are the other cultivated grasses besides rice and wheat. Rice और wheat हमारे cultivated grass के टाइप हैं, और कौन से cultivated grasses होते हैं? ठीक है, researchers first detected the pathogen in Brazilian wheat crop in 1980s. ठीक है, सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ब्राजील में। Now, what is the blast disease? जो wheat blast disease है उसमें क्या होता है? Blast is a worrisome plant disease of 50 species of grass, including two major food crops, rice and wheat. Recently कहाँ हुआ था? 2016 में बांग्लादेश में, जहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 100% लॉस देखा था। ये यूजुअली कब ज्यादा बढ़ता है ये डिजीज, व्हीट ब्लास्ट डिजीज? इट इज एग्रोवेटेड बाय द अनटाइमली रेनफॉल, जैसा अभी हम देख रहे थे लास्ट मंथ, एंड वार्मर विंटर, राइट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो विंटर्स आर बिकमिंग वार्मर, तो दिस टाइप ऑफ डिजीज आर मोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट वी सी बिहू। ये आपके द हिंदू में से है। क्या हुआ है? जो बिहू फेस्टिवल अभी हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें ऑल असम नागा वेलफेयर सोसाइटी जो है, दी ऑल असम सांगसा टांगसा स्टूडेंट यूनियन स्लैम्ड द यूज ऑफ रेसिस्ट सॉन्ग दैट कॉल द नागास ओपोरा, मीनिंग स्टूपिड और डम। ठीक है, नागास ऑफ असम हैव कंडेम्ड द रेसिस्ट सॉन्ग ड्यूरिंग द बिहू परफॉर्मेंस दैट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन April 13। आपको पता होगा April 13 को बिहू था, एंड उसमें एक परफॉर्मेंस हुआ था जिसमें अबाउट 11,300 फीमेल डांसर्स एंड मेल ड्रमर्स हैड असेंबल्ड, एंड दिस इज द लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस एट अ सिंगल वेन्यू। ठीक है, और ये गिनीज बुक में भी आ गया। इट वाज अ 15-minute परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज्ड एट दी सारू सजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी। तो अब आपको ये भी पता है कि सारू सजाई स्टेडियम कहाँ है? इट्स इन गुवाहाटी, right? Now, Naga people के बारे में let's see some facts. The Nagas are various ethnic groups native to northeastern India and northwestern Myanmar. तो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते, they are also found in Myanmar. Now, the group has similar cultures and traditions and form the majority of population in the Indian states of Nagaland and Naga self-administered zone of Myanmar. Now, with significant population Manipur, Arunachal Pradesh and Assam. कौन-कौन से regions में, कौन-कौन से states में है? There in Manipur, Arunachal Pradesh and Assam. Sagaing region and Kachin state in Myanmar. अब आपको Sagaing region अगर आता है and Kachin state आके पूछता है in which country these are, they are in Myanmar. What they have number of various groups. वो काफी ज्यादा divided है अपने groups में. Language जो वो बोलते हैं that is very distinct form of Naga languages, जो एक दूसरे से काफी अलग है। जो different groups of Naga, they speak different type of Naga language. Now, in India, the Naga population is spread across all northeast Indian states except Tripura and are listed as scheduled tribe in 6 northeastern states. Scheduled tribe है Naga, right? ये याद रखेंगे। 6 northeastern states में they are there. 7 sisters हैं, तो उसमें besides Tripura, बाकी 6 में they are found. Next, we'll
सी सम पॉइंट्स अबाउट बिहू। बिहू क्या है? इट इज अ फास्ट पेस्ड ब्रिस्क फुटस्टेप के साथ एक्सट्रीमली जॉयफुल डांस हेलिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। बिहू डांस का नाम है, राइट? ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है असम का। मतलब जो असम के 3 एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है उसमें ये डांस दे परफॉर्म ड्यूरिंग दीज एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। एक इज रोंगाली और बोहांग बिहू जो अप्रैल में होता है, जो अभी हुआ। देन इज भोगाली और माघ बिहू जो जनवरी में होता है। देन इज कंगाली काट और काटी बिहू। ये नाम याद रखेंगे हम। परफॉर्मर्स कौन होते हैं? दे आर यूजुअली यंग मेन एंड वुमेन इन ग्रुप्स। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स यूज होता है। बिहू फोक म्यूजिक यूज होता है जिसमें ड्रम्स एंड फ्लूट्स यूज होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिंबलाइजेस फर्टिलिटी एंड लव एंड सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द रेन नीडेड फॉर क्रॉप ग्रोथ। कल्चरल आइकन क्या है? ये असम का कल्चरल आइकन है, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ बिहू डांस कैन बी फाउंड इन 9th सेंचुरी तेजपुर एंड दरांग रीजन, ठीक है। एंड इट हैज आल्सो बीन रेफरेंस्ड इन इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द 14th century, right? Now, next news is from your PIB. This is on your World Heritage Day. World Heritage Day, International Day for Monuments and Sites, IDMS, is being celebrated today. Today मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल एक दिन बाद आता है, तो ये 18th को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में लेट्स सी सम पॉइंट्स। Every year on 18th April, it is celebrated to recognize all the efforts of relevant organization. Now, the theme this year offers the opportunity to respond to questions regarding learning our traditional ways of knowing and knowledge system in relation to climate action. Right? UN Decade of Action है ये। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS ने अनाउंस किया था दैट 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाएंगे। 1982 से वी आर सेलिब्रेटिंग। इट वाज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को इन 1983। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल Scientific and Cultural Organization has a total of 1,154 monuments designated. Apart from India, only Italy, Spain, Germany, China, and France have 40 or more World Heritage Sites. Out of 40 World Heritage Sites, 10 have been done in the last 9 years with a wide range of diversity from across India. So, India में 40 World Heritage Sites है. Now, India के tentative list में 37 add हुए हैं. तो अभी टोटल वी हैव 52 इन 2022। यूएन पे आपने इस साल भी काफी क्वेश्चंस देखे होंगे, सो यूएन बेस्ड क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब सेलिब्रेट होता है, विच इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन, यूनेस्को के बारे में यू शुड नो, एंड इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एंड इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट को भी जाके यू कैन सी वंस। नाउ वी विल गो थ्रू सम वन लाइनर न्यूज ऑफ 19th April 2023. So the first is your Uttaramerur inscription. Prime Minister Modi ने recently mention किया था, ये किनके reign में this inscription was written? It was in Prantak Chola I. The walls of Vaikundu Perumal temple in Uttaramerur are inscribed with details revealing systems of local governance from 10th century CE. तो Uttaramerur inscription में क्या है? It is on local governance. कहाँ पे है? वाइकुंडू पेरुवल टेम्पल में, विच वॉज द रूलर परांतक चोला वन। ना बुजी ब्रिज को इनॉग्रेट किया हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये कहाँ है? दिस इज इन मोजाम्बिक। प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया बना रहा है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? टिकाबूजी नोवा सोफाला रोड। इट इज अ 132 किलोमीटर रोड। Next one-liner news is the Union Ministry of Road Transport and Highways is planning to extend its incident management service to all national highway. Incident management service किसका है? It is under the Union Ministry of Road and Transport. The purpose of this step is to minimize road fatalities and improve safety of road users. Next, the Small Industry Development Bank of India, or SIDBI, has announced to launch of a pilot phase of Mission 50K EV4 Eco. Pilot scheme aims at strengthening EV ecosystem, including uptake for 2, 3, and 4-wheelers. Okay. Next, news number 5. Satuwani is a festival related to nature. The traditional harvest festival will be celebrated in North India, namely in Bihar. Satuwani कहाँ का festival है? बिहार का। क्यों celebrate करते हैं? It is a harvest festival
to mark the start of summer season. It includes eating sattu made out of lentil flour. Now, another festival is Jur Sital. ये मैथिली न्यू ईयर को कहते हैं, जो सतुआनी के नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों बिहार से है। ये मैथिली न्यू ईयर है, ये तो मार्क द स्टार्ट ऑफ समर सीजन एंड फॉर हार्वेस्ट, दोनों बिहार से है। नाउ 6th, Union Home Minister Amit Shah presided over a Chintan Shivir of senior officers of Ministry of Home Affairs in New Delhi. Government approves 8 projects worth rupees 638 crore for Clean Ganga Mission. Defense Minister Rajnath Singh approved a proposal for bringing in industry-friendly reform related to authority holding sealed particulars. Manipur Chief Minister inaugurates Hun Thadu Cultural Festival in Kangpokpi. ये याद रखिएगा, हुन थादू फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। Apple CEO Tim Cook opens Apple's first India store in Mumbai. First Apple India store कहाँ है? मुंबई में। G20 Digital Economy Working Group meeting held in Hyderabad. G20 का डिजिटल इकोनॉमी मीट कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। UN Secretary General condemns outbreak of fighting in Sudan, calls for an immediate ceasefire to resolve crisis. आपको पता होना चाहिए सुडान में अभी there is a crisis going on, वहाँ पे war outbreak हो गया। Kuwait's Crown Prince announces dissolution of National Assembly and calls for new elections. India and Russia agree to deepen trade and economic relations during the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. Surya Kumar Yadav was named Wisden's leading T20 cricketer of the year, while Harmanpreet Kaur becomes the first Indian woman to win a Wisden cricketer of the year. So this was all for today's current affairs. I hope you enjoyed it and you gained some knowledge. So those of you who have cleared or who know they are clearing the cutoffs for their respective academies of CDS and other examinations, you can join a third batch of SSB, which is starting on 1st May. It will be a 1,000 rupees course. I will be taking the classes and it will be 1-to-1 mentorship batch. For your SSB preparation, some special features of a batch will be that it will be only a 10 students batch. The course will be for 20 days. We'll be dealing with your site, interview, GD, lecturate preparation in detail. You will be given all the GTO tips and tricks. I am a soft skills certified trainer. I'll be helping you develop your soft skills, and personality development will also be there. You can check the details in the link in our bio. The main important thing or what makes us different is we'll be conducting 3 mock interviews for you. You will be having the dossier evaluation twice. There will be no rote memorization, only smart work and a lot of class practice. So see you tomorrow in the next session and more of you in our new batch of SSB. So see you tomorrow in tomorrow's current affair class. Thank you and bye-bye.